A senior Indian minister has made an unusual claim about the well-being of Indian Muslims. Finance Minister Nirmala Sitharaman told a conference in Washington that Muslims couldn't be doing as badly as is increasingly reported in the Western media. The proof? Their population has increased since independence from British rule in 1947. It was a far-fetched argument to make before a foreign audience, ostensibly to counter adverse reports swirling about the targeting of Muslims. A BBC documentary in particular recently riled the establishment into forcibly banishing the report from YouTube and other portals. The documentary cited a secret British assessment describing anti-Muslim pogroms in Gujarat in 2002, when Prime Minister Narendra Modi was the state's chief minister. The report held Mr. Modi directly accountable for the attack on Muslims. However, the targeting of minorities has expanded geographically and in its intensity to include Christians and Dalits with Mr. Modi's ascent to power, a charge Ms. Sitharaman struggled to contest. Indian countermeasures have included flat denial and bombardment of gullible audiences with Goebbelsian use of Hindu nationalist media. But Sitharaman's claim at the Peterson Institute for International Economics in Washington on April 10 was in a different league with forbidding implications elsewhere. By her logic, Palestinians living in an open-air prison under Israeli military occupation should be beholden to the usurpers and not challenging them. After all, their population also is growing, in fact, at a far higher pace than Indian Muslims. Apply the minister's population growth theory to the Rohingya, or Yemenis, or Afghans, and we should need to tweak our moral compasses to gain lessons in prosperity among those we believed were given a raw deal by man-made circumstances, but whose populations have grown nevertheless to ostensibly defy the claim. From 1990 to 2021, the population of Palestine increased from 1.98 million to 4.92 million people. As for Yemen, with the present growth rate of 3%, one of the highest in the world, its population would reach 34 million by 2025, despite the calamitous war. The Hindu right persists in expressing its misplaced apprehension on India becoming an Islamic country. The flip side of the argument would need similar adjustments. The Swiss, among other Europeans whose population is shrinking precariously, should be declared a destitute people. What exactly did Sitharaman tell the meeting? Reports say she said a whole lot of things, not least presenting an account, not without a grain of truth, of the raw deal minorities get in Pakistan. India has the second largest Muslim population in the world, and that population is only growing in numbers. If there is a perception, or if in reality, their lives are difficult or made difficult with the support of the state, which is what is implied in most of these write-ups, I would ask, will this happen in India in the sense, will the Muslim population be growing than what it was in 1947? It's a minor fact that Muslim population growth has been a tad ahead of Hindus. According to the 2011 census, Hindus were 79.80 PC at 966.2 m, Muslims were 14.23 PC at 172.2 m, Christians were 2.3 PC at 27.8 m and Sikhs were 1.72 PC at 20.8 m. Experts say the rate of Muslim population growth would go down in the next census, delayed by COVID. In the next census, the Hindu population would show a slight increase in the share of the population to increase to about 80.3 PC in comparison to 79.8 PC in the 2011 census. The Muslim population share would either stabilize or go down, Devendra Kothari, former chairman of the National Committee to Review Family Welfare, is quoted by the Press Trust of India as saying. As reported, according to Kothari, anyone with little knowledge of basic mathematics can calculate that even if Hindus don't produce any offspring and only Muslims give birth to children, religious demography would not tip off towards a Muslim majority before 2170. Kothari said, Muslims can only outnumber Hindus if the latter stop producing children completely, and that is not going to happen, so it is not possible. The Hindu right, however, persists in expressing its misplaced apprehension on India becoming an Islamic country.
Why growing population of Muslims in India should be a matter of concern is a constant theme, with Hindu extremists occasionally calling on their women to produce more children to prevent India from becoming an Islamic country. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath offers another toxic perspective. The Muslim population had gone up as they got special rights. What special rights? The Sachkar Committee, set up by the Congress-led alliance to prepare a report on the community's standing, regarded as blasphemous by the current regime, dismisses allegations of Muslim appeasement with hard facts. There is a clear and significant inverse association between the proportion of the Muslim population and the availability of educational infrastructures in small villages. There are no educational institutions in about a third of small villages with high concentrations of Muslim inhabitants. Meanwhile, among the large villages, about 40 PC with a substantial Muslim concentration do not have any medical facilities. Professor Emerita at Jawaharlal Nehru University Zoya Hassan notes that Muslim representation in parliament was at an all-time low in 2014. In the 1980 election, almost 10 PC of those elected were Muslim. In 2014, they accounted for less than 4 PC, the lowest figure since 1952. Moreover, the number of Muslim lawmakers has gone down from 49 in 1980 to 23 in 2014, which was down from 30 in 2009. The underrepresentation of Muslims is stark when compared to their population proportion of 14 PC. Going by their population, they should have at least 77 MPs in the Lok Sabha, but their number is only 23, accounting for a deficit of 54 members. There's an opening for Ms. Sitaraman to use. Muslim MPs increased to 27 in 2019, by 3, an improvement in their life the West shouldn't ignore. The writer is Dawn's correspondent in Delhi. Published in Dawn, April 18, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. youtube.com/@dawnvocabulary. भारत के एक सीनियर वजीर ने भारतीय मुसलमानों की फलाह व बहबूद के हवाले से गैर मामूली दावा किया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने वाशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुसलमानों की हालत इतनी खराब नहीं हो सकती जितनी मगरबी मीडिया में तेजी से रिपोर्ट हो रही है। क्या सबूत है? 1947 में बरतानवी हुक्मरानी से आज़ादी के बाद से उनकी आबादी में इजाफा हुआ है। गैर मुल्की सामीन के सामने मुसलमानों को निशाना बनाने के बारे में गर्दिश करने वाली मनफी खबरों का मुकाबला करने के लिए एक बहुत दूर की दलील थी। खास तौर पर BBC की एक दस्तावेजी फिल्म ने हाल ही में यूट्यूब और दीगर पोर्टल से इस रिपोर्ट को जबरदस्ती हटाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया। दस्तावेजी फिल्म में एक खुफिया बरतानवी तखमीने का हवाला दिया गया है, जिसमें 2002 में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ फसादात का जिक्र किया गया था, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी रियासत के वजीर आला थे। रिपोर्ट में मोदी को मुसलमानों पर हमले का बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया गया है। ताहम अक़लियतों को निशाना बनाने का रुझान जुग्राफियाई और शिद्दत के लिहाज से वसी हो गया है और मोदी के इक़्तिदार में आने के साथ ही ईसाइयों और दिलतों को भी शामिल कर लिया गया है। भारतीय जवाबी इक़दामात में हिंदू कौम परस्त ज़राए इब्लाग के गोबिल्स के इस्तेमाल के साथ सादा लौ सामीन की खुलम खुला तरदीद और बमबारी शामिल है। लेकिन 10 अप्रैल को वाशिंगटन के पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकनॉमिक्स में सीतारमण का दावा मुख्तलिफ था, जिसके असरात कहीं और नहीं थे। उनकी मंतिक के मुताबिक इसराइली फौज के कब्जे में खुली जेल में रहने वाले फ़लस्तीनियों को गासिबों के सामने झुक जाना चाहिए और उन्हें चैलेंज नहीं करना चाहिए। आखिरकार इनकी आबादी भी बढ़ रही है, दरहकीकत हिंदुस्तानी मुसलमानों के मुकाबले में कहीं ज्यादा रफ्तार से। वजीर के आबादी में इजाफे के नजरिए को रोहिंग्या यमनी अफगानों पर लागू करें और हमें अपने इखलाकी पहलुओं को तब्दील करने की ज़रूरत है ताकि इन लोगों में खुशहाली का सबक हासिल किया जा सके, जिनके बारे में हमारा ख्याल था कि उन्हें इंसानों के बनाए हुए हालात ने कच्चा सौदा दिया है, लेकिन जिनकी आबादी में बज़ाहिर इस दावे की नफ़ी करने के लिए इजाफा हुआ है। 1990 से 2021 तक फ़लस्तीन की आबादी 1.98 मिलियन से बढ़कर 4.92 मिलियन हो गई।
जहां तक यमन की बात है तो उसकी मौजूदा शरह नमू 3% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 2025 अशारिया तक इसकी आबादी 3 करोड़ 40 लाख तक पहुंच जाएगी। हिंदू दाएं बाजू भारत के इस्लामी मुल्क बनने के बारे में अपने गलत खदशात का इजहार करता रहता है। दलील के दूसरे पहलू को भी इसी तरह की एडजस्टमेंट की जरूरत होगी। स्विट्जरलैंड दीगर यूरोपीय बाशिंदों के अलावा, जिनकी आबादी गैर यकीनी तौर पर सिकुड़ रही है, को बेसहारा लोग करार दिया जाना चाहिए। सीतारमन ने मीटिंग में क्या बताया? रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्होंने पाकिस्तान में अक़लियतों को मिलने वाले खाम माल के बारे में बहुत सी बातें कही हैं, कम अज कम एक बयान पेश करने के अलावा सच्चाई के दाने के बगैर भी नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया में मुसलमानों की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क है और ये आबादी सिर्फ तादाद में बढ़ रही है। अगर कोई तासुर है, हकीकत में रियासत की मदद से उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी गई है, जो कि इनमें से ज्यादातर तहरीरों में जाहिर होता है। तो मैं पूछूंगा, क्या हिंदुस्तान में इस मानी में ऐसा होगा? क्या मुस्लिम आबादी 1947 के मुकाबले में बढ़ रही होगी? ये एक मामूली हकीकत है कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा हिंदुओं से कुछ आगे रहा है। 2011 की मरदम शुमारी के मुताबिक 96 करोड़ 62 लाख पर हिंदू 79.80%, मुसलमान 17 करोड़ 22 लाख, ईसाई 2 करोड़ 33 लाख 23.8 और सिख 1.72% 20.8 थे। माहिरीन का कहना है कि अगली मरदम शुमारी में मुस्लिम आबादी में इजाफे की शरह कम हो जाएगी, जिसमें कोविड की वजह से ताखीर होगी। उन्होंने कहा कि अगली मरदम शुमारी में हिंदुओं की आबादी में मामूली इजाफा होकर 80.3% हो जाएगा, जो 2011 की मरदम शुमारी में 79.8% था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने फैमिली वेलफेयर का जायजा लेने वाली कौमी कमेटी के साबिक चेयरमैन देविंदर कोठारी के हवाले से कहा कि मुस्लिम आबादी का हिस्सा तो मुस्तहकम हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोठारी के मुताबिक बुनियादी रियाजी का बहुत कम इल्म रखने वाला कोई भी शख्स इस बात का हिसाब लगा सकता है कि अगर हिंदू कोई औलाद पैदा नहीं करते हैं और सिर्फ मुसलमान बच्चों को जन्म देते हैं, तो मजहबी आबादी 2170 से पहले मुस्लिम अक्सरियत की तरफ इशारा नहीं करेगी। कोठारी ने कहा कि मुसलमानों की तादाद सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है जब हिंदू बच्चे पैदा करना मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, और ऐसा नहीं होने वाला है, इसलिए यह मुमकिन नहीं है। ताहम हिंदू दाएं बाजू हिंदुस्तान के एक इस्लामी मुल्क बनने के बारे में अपने गलत खदशात का इजहार करता रहता है। हिंदुस्तान में मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी तशवीश का मौजू क्यों होनी चाहिए कि एक मुस्तकिल मौजू है, और हिंदू इंतहा पसंद कभी कभार अपनी ख्वातीन से मुतालबा करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें ताकि हिंदुस्तान को एक इस्लामी मुल्क बनने से रोका जा सके। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ एक और जहरीला नुक्ता नजर पेश करते हैं। मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है क्योंकि उन्हें खुसूसी हुकूक मिले हैं। क्या खास हुकूक हैं? कांग्रेस की क़ियादत वाले इत्तेहाद की जानिब से इस कम्युनिटी की हैसियत मौजूदा हुकूमत की तरफ से तौहीन मजहब के तौर पर समझा जाता है, पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए तश्कील दी गई सचर कमेटी ने सख्त हकायक के साथ मुसलमानों की खुशनुदी के इल्जामात को मुस्तरद किया है। मुस्लिम आबादी के तनासुब और छोटे गाँवों में तालीमी बुनियादी ढांचे की दस्तयाबी के दरमियान एक वाज़ेह और अहम उल्टा ताल्लुक है। तकरीबन 1/3 छोटे गाँवों में कोई तालीमी इदारा नहीं है जहां मुसलमानों की तादाद ज्यादा है। दरियासना बड़े गाँवों में तकरीबन 40% जहां मुसलमानों की बड़ी तादाद है, को तिब्बी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ज़ुया हसन कहती हैं कि 2014 में पार्लियामेंट में मुसलमानों की नुमाइंदगी अब तक की कम तरीन सतह पर थी। 1980 अशारिया के इंतखाबात में मुंतखब होने वालों में से तकरीबन 10% मुसलमान थे। 2014 में यह तादाद 4% से भी कम थी, जो 1952 के बाद से सबसे कम है। इसके अलावा मुस्लिम कानून साजों की तादाद 1980 में 49 से घटकर 2014 में 23 रह गई है, जो 2009 में 30 थी। उन्होंने कहा कि आबादी के तनासुब 14% के मुकाबले में मुसलमानों की नुमाइंदगी बहुत कम है। उनकी आबादी को देखते हुए लोकसभा में उनके कम अज कम 77 अरकान होने चाहिए थे, लेकिन उनकी तादाद सिर्फ 23 है, जिसमें चून अरकान की कमी है। मोहतरमा से तरमन के लिए इस्तेमाल करने का एक मौका है।
2019 में मुस्लिम अरकान पार्लियामेंट की तादाद बढ़कर 27 हो गई, जो कि 3 गुना बढ़ गई है, और उनकी जिंदगी में बेहतरी को मगरिब को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। मजमून निगार दिल्ली में दान के नामा निगार हैं। अखज़ शुदा बतारीख 18 अप्रैल 2023। For more videos, subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com/@dawnvocabulary. Like, subscribe, share and comments.